Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So this is the next part of DBT crash course. I have already uploaded the previous version, session 1 to 5. I will provide the link of those videos in this video. You can check it out. So do practice all the question and make a pointer out of it because it will be beneficial for you while revising. So let's solve the first question of today's video. So this is the first question. So you have to match the plant product mentioned in group 1 with the plant species in group 2 that produces them. So sources match करने हैं आपको and group 3 where they accumulate the most. So the first one is licorice. Licorice commonly known as mulethi, which has so many medicinal values. So this licorice scientific name is Glycyrrhiza glabera. यानी इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसीराइजा ग्लेबेरा. सो पी का किस में मैचिंग हो रहा है? पी का मैचिंग हो रहा है 3 में एंड इट इज़ अ रूट. सो ये मैचिंग होगा ग्रुप 3 का बी में. यानी पी का 3 बी, पी का 3 बी किस में है? यहाँ भी दिख रहा है एंड यहाँ भी दिख रहा है. सो हमें इसको एलिमिनेट कर देना है एंड इसको एलिमिनेट कर देना है. यानी आंसर ए भी हो सकता है, सी भी हो सकता है. नाउ द क्यू ऑप्शन इज क्विनीन. So quinine is a very well-known anti-malarial drug which is derived from the bark of the tree of the genus Cinchona. So Q का क्या होगा? Q का होगा Cinchona and as I mentioned that it is a bark. यानी कि Q का फर्स्ट और ग्रुप 3 में क्या होगा? ऑप्शन D. तो Q का फर्स्ट और D किस में है? Q का फर्स्ट और D यहाँ भी है एंड यहाँ भी है. यानी कि अब भी हमें दोनों ऑप्शंस को ही कंसिडर करना है. नाउ हैना. सो हैना इज फ्रॉम लॉसोनिया इनर्बिस यानी आर का 2 एंड इट इज़ अ लीफ जो हम लगाते हैं हाथों में. सो आर का 2 और ए, आर का 2 और ए किस में है? इसमें है. इसमें आर का 2 का ई दिया है यानी ये भी एलिमिनेट हो गया. हमारा करेक्ट आंसर निकल गया ऑप्शन ए. लास्ट बचता है सैफ्रॉन. सो जो सैफ्रॉन है it is isolated from the crocus sativus, that is fifth option, and it is more extracted in the flower. So इस तरह से S का फिफ्थ का C. So इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको DBT में देखने को मिल सकते हैं. Like अगर आपको ग्रुप 3 ना भी दे, so from this also they can ask so many questions like the scientific name of licorice or licorice is extracted out from which part of the plant. So इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. So the correct answer for this question is option A. Now let's move on to the next question. So the next question is again a matching question. You have to match the type of ecological interaction in group 1 with their respective definition in group 2. So it is proto-cooperation, commensalism, amensalism, helotism. So out of all these options mentioned, you must be aware about this commensalism. Commensalism तो पता ही होगा. I have already uploaded video regarding the commensalism and the amensalism. So ये सब जो है commensalism, amensalism, you should remember that it is a type of interaction in which the one species is benefited and the other one is neither benefited nor harmed, neutral. And in this amensalism, the one is harmed and the next one is neither harmed nor benefited. So commensalism +0 वाला है. So ढूंढते हैं ऑप्शन. टाइप फाइंड आउट द आंसर. ये वाला जो अभी हमने पढ़ा वो कहाँ मैच हो रहा है? सो यहाँ पे एक ऑप्शन है वन स्पीशीज इज हार्म बट दैन अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड यानी कि ये -0 वाला एमेंसलिज्म. तो एमेंसलिज्म का फर्स्ट हो जाएगा आर का फर्स्ट. आर का फर्स्ट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है यानी कि बी एलिमिनेट, सी एलिमिनेट, डी एलिमिनेट. नाउ कॉमनसेलिज्म का भी ढूंढते हैं. A type of mutualism where one species is benefited more than the other. No, one is benefited and the other one is neither benefited nor harmed. तो comparison की तो बात ही नहीं आती. ये तो होगा नहीं commensalism का. Both the species are benefited. ये यहीं पे गलत हो गया. One species is benefited without harming the other. ये होगा commensalism का यानी +0. और amensalism में माइनस और 0 यानी कि Q का क्या है 4. तो Q का 4 यहाँ है. ऑलरेडी हमने आंसर निकाल चुका था. अब
प्रोटो कोऑपरेशन क्या होता है? बोथ द स्पीशीज आर बेनिफिटेड बट द इंटरेक्शन बिटवीन देम इज नॉट ऑब्लिगेटरी। जरूरी नहीं है कि वो लोग हमेशा इंटरेक्शन करें फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, बट अगर दोनों एसोसिएट होते हैं सो बेनिफिट उन्हें मिलता है। सो प्रोटो कोऑपरेशन में ऐसा होता है कि प्रोटो कोऑपरेशन का दूसरा नाम होता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म यानी कि an ecological interaction where two species benefit from their interaction but the relationship is not essential for their survival. They can survive independently also. So प्रोटो कोऑपरेशन में ये चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हर्मिट क्रैब एंड सी एनिमल्स, तो जो हर्मिट क्रैब है वो शेल के इनसाइड में रहता है एंड सम स्पीशीज ऑफ सी एनिमल लिव ऑन द शेल। द एनिमल बेनिफिट फ्रॉम द क्रैब्स मोटिलिटी or the mobility which help them to find food, and the crab benefit from the anemone's stinging tentacle which deter the predators. So this is how they survive. So इस टाइप के कोऑपरेशन जहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है कि इंटरेक्शन करना ही करना है is known as the proto cooperation. So now helotism. Helotism क्या होता है? A type of mutualism where one species is benefited more than the other, यानी कि S का 2. So करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सो इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है डीबीटी में डायरेक्टली। इनमें से कोई भी सिंगल भी आ सकता है, प्रोटो कोऑपरेशन, कॉमेंसालिज्म, एमेंसालिज्म, हिलोटिज्म, या फिर एग्जांपल दे दे और आपको पूछे कि कौन सा इंटरेक्शन है। ऑल दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। वन मोर क्वेश्चन, which of the following combination of plant diseases and the types of their causal organisms is are correct? Black rot of crucifer, which is a bacterial disease, Tungro disease of rice, mycoplasma based disease, root knot of tomato, which is a nematode based disease. So if you remember, the late blight of potato is caused by a fungus. Fungus, उसका नाम क्या है? उसका नाम है Phytophthora infestans. Phytophthora infestans. सो इस फंगस की वजह से लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो वाली डिजीज होती है. सो इट इज नॉट अ बैक्टीरियल बेस्ड डिजीज, इट इज अ फंगल बेस्ड डिजीज. सो ए ऑप्शन कट गया. नाउ ब्लैक रॉट ऑफ क्रूसीफर, सो दिस इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, सो ये करेक्ट हो जाता है. टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. द टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड नॉट माइकोप्लाज्मा. ये रॉन्ग है. टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस इज अ प्लांट पैथोजेनिक वायरस डिजीज. ये वायरस बेस्ड है, इसलिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. नाउ डी इज रूट नॉट ऑफ टोमेटो, सो रूट नॉट ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय अ नीमाटोड, यानी ये भी ऑप्शन सही है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन है बी और डी. So see how a question can be framed, that whether the causal organism is a bacteria, virus, or nematode or mycoplasma. So you have to remember all these things while answering. कि कोई भी डिजीज बैक्टीरिया से हो रही है तो आपको स्पेसिफिक बैक्टीरिया का भी नाम पूछ सकता है. I have already provided the video regarding the different kind of plant-based diseases from fungus as well as the bacteria. So I will provide the link because this is so many times asked in DBT, even in CSIR also. So the correct answer for this question is B and D. Now moving on to the next question. Which of these are rare amino acid in a protein? Leucine and serine, lysine and glutamic acid, tryptophan and methionine, leucine and lysine. Tryptophan and methionine are the very rarest amino acid in a protein. So tryptophan and methionine are rare in protein as they have only one codon. यानी tryptophan and methionine only have a single codon in the whole genetic code. So therefore the chances of occurrence is low as compared to the other amino acid. While the amino acid code for lysine, leucine, serine, glutamic acid is more than one codon. So they may occur more than the tryptophan and methionine. So the correct answer for this question is tryptophan and methionine. Now next question. Which of the iron state myoglobin binds to the oxygen? कौन से state में जब iron रहता है तब myoglobin से bind होता है? So it is in the ferrous state in which the myoglobin binds the oxygen. यानी myoglobin only in the Fe2+, जिसे हम कहते हैं ferrous
state can bind with the oxygen. Iron atom has 6 coordination bond, 4 in the flat and 2 in the perpendicular state to the porphyrin ring. यानी कि इस टाइप का आप इमेजिन कर सकते हैं, ऐसा 4 एंड ऐसा 6. तो the oxygen binding site is present on the other side of the 6 coordination position. So basically iron जब Fe2+ state में होता है तो ही वो bind करता है myoglobin से. So you have to remember that. So the correct answer for this question is option A. Moving on to the next question. Which sentence is incorrect regarding molten globule state of protein? Hydrophobic interaction among nonpolar residue, the collapsed state, it is less compact, the denatured state. So the right answer for this question is the denatured state. Basically incorrect क्या है, अगर हम लोग molten globule की बात करें, it is a state in which interior side chains remain mobile but it is less compact and there is no proper packing. यानी molten है मतलब movable है, therefore it will not have any compactness in its structure and no proper packing. So this state is completely different from the native as well as the denatured state. It is not as like as the native state, structure of the protein or the denatured structure of the protein. So molten globule have hydrophobic interaction among the nonpolar residues. They are known as the collapsed state. It is less compact, but you cannot say that it is denatured state. So the right answer for this question is denatured state. Now next one. Which of the following phylum is known for its asymmetrical body shape? Mollusca, Arthropoda, Annelida, Porifera. So as you all know, there are so many characteristics of animal kingdom. So out of which the asymmetrical body shape is of the Porifera, which is also known as the sponges. So see here, if you want to cut this icon into two equal halves through any plane, you will not be able to do that because of their asymmetric body nature. If it is in symmetrical nature, like if it is like this, so you will be able to cut it down in equal halves. But as the structure is, you cannot just cut it in any equal halves through any plane. So Porifera are regarded as the asymmetrical body organism. Now next question. Which of the following is known as scavengers in the marine ecosystem? Lamprey, hagfish, Scoliodon, Christies. So, किसे कहा जाता है scavengers in the marine ecosystem? So, it is the hagfish which is known as the scavenger. ये hagfish को scavenger बोला जाता है because it preys upon smaller fish and invertebrates and are frequent scavengers on the corpses of large bodies animals down from the shallower, more productive environment. यानी जनरली जो हैगफिश है वो छोटे छोटे फिशेस को खाती है एंड छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट्स को, एंड दे आर द फ्रीक्वेंट स्कैवेंजर्स. दे कंज्यूम द डेड बॉडीज ऑफ द लार्ज बॉडीड एनिमल फाउंड इन द सी. सो ये सारी चीज़ों को वो लोग कंज्यूम करते हैं. फॉर दिस रीजन दे आर रिगार्डेड एज द what scavengers of the marine ecosystem. So now one more question, which is a matching one. Match the item in column 1 with the corresponding technique in column 2. So in the column 1, blue laser, tungsten filament, and label protein, polyacrylamide. So आपको इनमें से familiar option को choose करना है पहले. So this polyacrylamide, which is used for the protein electrophoresis, that is the SDS page. So you should match the S with the third one, that is electrophoresis. यानी S का 3. S का 3 किस में दिख रहा है? S का 3 यहाँ दिख रहा है and यहाँ दिख रहा है, यानी कि ये option eliminate हो गया, ये option eliminate हो गया. Now this N-label protein. So this N-label protein is for nuclear magnetic resonance spectroscopy, NMR spectroscopy. So R का matching होगा 4 के साथ, तो R का matching दोनों में ही दिया है 4. Now this tungsten filament is used in the electron microscopy, यानी Q का first किसमें है? सिर्फ इसमें, यानी ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आंसर निकल के आ गया सेकेंड में. और ब्लू लेजर इज यूज्ड फॉर फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग. सो टेक्निक्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. सो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ब्लू लेजर. सो दिस ब्लू लेजर फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेस द ब्लू लेजर्स
Yeah, that excites the fluorescent molecule present in the sample, and it causes them to emit light at a longer wavelength, which is then analyzed to identify and quantify that molecule. So this is the very important kind of technique. So you can remember it. एंड इसके अलावा भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि आप इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट मिस कर देंगे, सो यू विल मेक अ वेरी बिग लॉस टू यू. सो डोंट डू इट. जैसे जैसे क्वेश्चंस को मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल के देखिए कौन कौन से टेक्निक से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे टेक्निक से रिलेटेड, और जो ईजी होते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ही होते हैं. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, यानी ब्लू लेजर का क्या है? फ्लोरेसेंस, एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग, टंगस्टन फिलामेंट is used in electron microscopy, and level protein is for NMR, polyacrylamide is for electrophoresis. So this is all for today. I hope you liked it, and अगर आपको अच्छा लग रहा हो, do subscribe it because it motivates me a lot to make more such content. And if you like to interact with me, you can connect with me in the top mid for a one-to-one session. You can book a session as per your convenience. There are so many slots available.